Hello, salam, namaste, sat sri akal and copy to all. This is Interurban KG and welcome to my YouTube channel. तो जी वैसे तो महाकाल की नगरी उज्जैन जो है वो रिलीजियस टूरिज़्म के लिए मानी जाती है, पर यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर 2-2.5 घंटे की ड्राइव पे एक पतालपानी वाटरफॉल है। अब कहते तो हैं कि ये सिर्फ बरसातों में ही चलती है, पर इस वक्त टाइम है अक्टूबर का, पर हम ट्राई करके देख के आते हैं कि है क्या पाताल पानी में थोड़ा सा भी पानी उस वाटरफॉल में। तो चले करें आज के दिन की शुरुआत। जय माता दी, जय महाकाल। I've been some crazy since the day I was born. I've done some things that you just couldn't ignore. It's the chase and the haste of all I adore. But you got me where you want me, so just give me some more. It's like it's just my wild तो जी उज्जैन से पतालपानी की तरफ आते हुए आप पकड़ते हो मुंबई वाला हाईवे और फिर एक रोड कटती है और ये जगह आई थिंक कंटोनमेंट एरिया है और इस वक्त हम करीब पतालपानी से 10 किलोमीटर दूर है और गूगल बाबा दोबारा आपको एक आधे गाँव के अंदर से तो ले ही जाएंगे। बट आई थिंक लुक्स गुड। अक्टूबर में भी काफ़ी ग्रीनरी है। दिखाते हैं आपको पतालपानी वाटरफॉल से वेरी वेरी and it's true. It's just my wild side. It's just the state of mind. It's just my wild side. Oh, you know, the feeling goes, I can't describe. Oh, you know, the feeling goes, I can't describe. I'll keep on living in the way that I do. Don't you go tell me that I'm failing to choose. It's the faith in the change that I'm never confused. So you know I'll keep believing all the things that I do. It's like it's just my wild side. तो जी ये है पातालपानी। एक और एग्जांपल कैसे हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री इंडिया में इतनी अच्छी लोकेशन को बर्बाद कर रही है। आई थिंक अगर आप उज्जैन आते हो दिस इज़ परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट, सो डू कम हेयर। थोड़ी फैसिलिटीज़ कम है, थोड़ी सी गंदगी है, पर व्यू इज़ जस्ट ऑसम। It's just the state of mind. It's just my wild side. How was it? Point at the map and we'll get there somehow. The sky ain't falling, let's get out of this town. Our time is vital and we're making it count. तो जी ये था पातालपानी, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस, एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल्स आई हैव सीन इन इंडिया। पर आयरनी देखो कि दिस प्लेस इज़ नॉट मेंटेन्ड और एडवर्टाइज सो मच बाय द एमपी टूरिज़्म। ये स्ट्रीम आप पीछे देख रहे हो यही बेसिकली बनती है आगे जाके वाटरफॉल। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेसेस इफ़ यू आर अराउंड उज्जैन और इंदौर। एंड आई थिंक बाय अक्टूबर, एज आई सेड कि हम अभी अक्टूबर में आए हैं, एक ट्रेन भी यहाँ पे आती है विच आई थिंक कम्स फ्रॉम अराउंड 4 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर और वो वीकेंड्स पे चलती है। बट आई थिंक कमिंग बाय अ कार इज़ ऑल्सो गुड। रास्ते में आर्मी एरिया है वो भी काफ़ी अच्छा है। एंड लुक एट जस्ट दिस व्यू। आई मीन in any country this place would have been at the top of the radar of every tourism ministry or whatsoever. I hope कि Indian tourism भी इसको promote करेगा। But if you are near Indore or Ujjain, I highly recommend that you come and visit this place. It's called Patalpani. तो ये था पतालपानी का वीडियो। I hope you liked the video. If you did, मर्जी है, सब्सक्राइब करना है तो कर लेना, नहीं करना तो कोई बात नहीं। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। रब राखा। Get up on your feet, this is a shakedown. Order up that beat just like it's takeout. Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll.